Hello dear students, so this is the next derivation. The derivation number is 6. This derivation is torque on an electric dipole which is kept in a uniform electric field. Pretty easy one, but it is generally coming in 1 mark or 2 mark sometimes, and it is easy one. Okay, so let's start with a uniform electric field which is shown like this, parallel arrows like this. Okay, so this is a uniform electric field E, and then the dipole AB, right, minus Q at A plus Q at B. This is how it is kept in this orientation. The angle between the electric field and the dipole moment is theta. Dipole moment is shown here P. Dipole moment is always from the minus charge towards the plus charge along the axis of the dipole. So this is the dipole and this is the electric field. So the angle is theta between them. Okay. So let's first talk about the force, because if you have to calculate torque on the dipole, let's first find the force. The force, देख लेते हैं एक बार. On this plus charge, the force would be along the electric field. On a positive charge, the direction of force is along the electric field in the same direction as electric field. Q into E, that is the force we know. Acts like this. But on a negative charge, the force is opposite to the direction of electric field. So like this. Okay. So one force is like this, one force is like this. This is how these two forces are acting on this dipole. These forces are equal. These forces are equal, QE and QE, but they are in opposite direction. Hence, they will cancel each other. That means there is no net force on the dipole. But in a uniform electric field, remember this thing, if the electric field is uniform, there will be no net force on the dipole. For a non-uniform case, force can act, right? So only for uniform, there is no net force. So net force तो हो गया 0. अब आते हैं net torque पे. So torque पे क्या torque भी 0 है? देखते हैं एक बार. आप जरा फील करो, एक फोर्स इसको ऐसे खींच रहा है और दूसरा फोर्स इसको ऐसे खींच रहा है. They are trying to pull it like this. So obviously it will try to rotate in this direction, in this orientation, right? So they will form a couple. What is a couple? Couple is when two forces act on an object which are equal and opposite and their line of action is different. So let's see if these forces are forming a couple. Are they equal? Yes, they are equal. QE and QE. Are they opposite? Yes, they are opposite. Is their line of action different? इसकी line of action है ये, इसकी line of action है ये. So their line of action is totally different, right? So that means they form a couple, and couple always try to rotate the object. ठीक है? और couple का torque कैसे निकलता है? Couple का torque निकालने के लिए आपको चाहिए होता है one of the force, कोई एक force ले लो आप, and then multiply that force with the perpendicular distance between the line of action of those two forces. अब इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आप जरा इमेजिन करो, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस bm नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, राइट? सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 2l and if this angle is theta, so this bm distance would be what? 2l sin theta. तो ठीक है, फोर्स मालूम है QE, perpendicular distance मालूम है 2l sin theta. From the force into the perpendicular distance, you will get the torque. So torque निकाल लेते हैं. So net torque would be one of the force into the perpendicular distance. तो यहाँ पे force को ले लिया हमने QE. Remember आपको एक ही force लेना है कोई, right? 2 QE नहीं करना है, सिर्फ QE. One of the force into perpendicular distance which is 2l sin theta. तो अब यहाँ पे Q into 2l, ये क्वांटिटी क्या हो गई? डाइपोल मोमेंट हो गई. तो इसको आप लिख दोगे P, तो जाएगा PE sin थीटा. तो ये आपका फॉर्मूला आ गया टॉर्क का इन द वैल्यू फॉर्म, राइट? मैग्नीट्यूड. टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा. But torque is a vector quantity, so we have to write the corresponding vector form as well. So in vector form, we get it like this: P cross E. P cross E, because P cross E आप करोगे तो वो PE sin थीटा ही आएगा. दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट आप करते हो AB, A cross B, तो क्या होता है? AB sin थीटा. तो यहाँ पे P cross E कर रहे हो तो PE sin थीटा. This will be your net torque. तो वेक्टर फॉर्म में P cross E
और मैग्नीट्यूड फॉर्म में PE sin थीटा आ गया। नाउ फॉर मैक्सिमम टॉर्क क्या आना चाहिए? मैक्सिमम टॉर्क के लिए अगर sin थीटा शुड बी 1, थीटा शुड बी 90 डिग्रीज। मैक्सिमम टॉर्क आ गया PE एंड यू विल गेट मैक्सिमम टॉर्क व्हेन द डायपोल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो डायपोल को आपने ऐसा रख दिया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डायपोल, तो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। मिनिमम टॉर्क कब होगा? आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डायपोल भी ऐसे रख दो, देयर विल बी नो टॉर्क, जीरो टॉर्क, बिकॉज थीटा विल बी जीरो। सो मिनिमम टॉर्क कैन बी जीरो, मैक्सिमम टॉर्क कैन बी PE। ठीक है? सो इफ अ डायपोल इज केप्ट अलोंग E, वेदर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि थीटा इक्वल टू 180 होगा ऑपोजिट के लिए, इन दोनों ही केस में हमारा टॉर्क जीरो आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।